when we order the X-ray, we can see that the shoulder joint has completely dislocated out of the socket, and it is not inside the socket. In fact, anteriorly to the socket. तो आपने एक्सरे देखे हैं अभी. एक्सरे में आपने देखा कि जो शोल्डर का जॉइंट है, जैसे दिस इज द शोल्डर, तो एक्सरेज में तो आपको दिखाई दिया था. तो दिस इज द जॉइंट, और ये शोल्डर जो होता है, इट बेसिकली कम द हेड ऑफ ह्यूमरस कहते हैं. दिस हेड ऑफ द ह्यूमरस इट कम्स इन एंटीरियरली, ये यहाँ पे आगे आके रुक जाता है. तो ये सॉकेट जो है ये बिल्कुल खाली रह जाता है और शोल्डर आगे आ जाता है. तो हमारा क्या मकसद है, इस शोल्डर को, जो ये शोल्डर जो आगे आ चुका है, इसको हमें वापस अपने सॉकेट में बिठाना है. तो इसको बिठाने के 4-5 तरीके होते हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो हम लोग यूजली फॉलो करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये शोल्डर डिसलोकेशंस आर ऑलवेज रिड्यूस्ड अंडर माइल्ड सिडेशन, बिकॉज अगर हम सिडेशन नहीं देते हैं, ऑब्वियसली अंडर सम एनेस्थीसिया, तो ये मसल्स काफ़ी स्टिफ हो जाती है, और अगर मसल स्टिफ हो जाती हैं तो शोल्डर रिडक्शन बहुत मुश्किल से आता है. तो बिकॉज दिस इज ओनली अ सिमुलेटेड पेशेंट्स, वी आर जस्ट गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट द मेथड्स ऑफ रिडक्शन, and we are not going to show you all the anesthesia and all those procedures or protocols. But saying that, we always do reduction of shoulder under anesthesia because it is also not painful to the patient. Patient भी काफ़ी comfortable होता है जब हम anesthesia देते हैं, और reduction भी बहुत आराम से आ जाता है. So now we are basically making the patient lie down. अल्तमश आप यहाँ पे लेट जाइए. It is severely painful. शूज उतारना. So we basically usually use around 4 methods. जो फर्स्ट मेथड होता है शोल्डर रिडक्शन का, हम लोग उसको कहते हैं कॉकर्स मैन्यूवर, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेथड्स यूज्ड. तो ये शोल्डर में हम लोग क्या करेंगे, वी बेसिकली टेल द पेशेंट रिलैक्स. ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू बी अंडर सेडेशन, बट वी होल्ड द शोल्डर, और सबसे पहले हम लोग इसको ट्रैक्शन देते हैं. इट्स डेली पेनफुल एंड ही विल नॉट बी एबल टू बेयर द पेन इफ आई एम डूइंग इट अंडर full consciousness. So this patient is under sedation. Assuming that, we hold the arm and we apply traction, putting traction, and then we externally rotate the arm. Okay, so first step, traction. Okay, ऐसे सीधे रहना है. First step, traction, then external rotation, then adduction, and then internal rotation. And as soon as we do this, the shoulder joint pops into its place. This is the first method of reduction of the shoulder, which is called as the Cocker's method. Once more, first step, traction, external rotation, adduction, and then internal rotation. And we keep it like this with the help of a slave. So this is the first method. But sometimes this method, ये method काम नहीं करता है, because either some muscles are very stiff, और बहुत सी problems होती हैं जिसकी वजह से हम लोग करते हैं. Which I usually, I usually prefer the method is that it is basically a Stimson's method, लेकिन अब a sort of modification of it. तो मैं पेशेंट को क्या करता हूँ, मैं पेशेंट को उल्टा लिटा देता हूँ. उल्टा लेट जाओ इस तरह से, और शोल्डर को हैंग कर लो. ना इसमें क्या होता है कि शोल्डर को मैं यूजुअली हैंग कर लेता हूँ. एक दो बार मैंने पेशेंट को अंडर, ही वाज फुली कॉन्शियस एंड आई रिड्यूस द शोल्डर लाइक दिस, इट इमीडिएटली पॉप इनटू इट्स प्लेस एंड इट वाज रियली नॉट पेनफुल. तो बेसिकली इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें हम लोगों को एक सपोर्ट मिल गया, एक फलक्रम मिल गया ट्रैक्शन देने के लिए. कॉकर्स मैन्यूवर में मुझे खुद ट्रैक्शन देना पड़ता था, और कई बार हम लोगों को एक काउंटर ट्रैक्शन भी देना पड़ता है. इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, ना ही दूसरे आदमी की ज़रूरत है. वी मेक द पेशेंट लाई प्रोन. ओके, ही इज़ लाइंग प्रोन, और यहाँ पे सपोर्ट होना ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा ट्रैक्शन आए लाइक दिस. ठीक है. स्टिम्सन्स मेथड में हम लोग यहाँ पे वेट्स डाल देते हैं, और उस वेट्स के सहारे ये रिडक्शन अपने आप आ जाता है शोल्डर में. बट it's a slight modification of that method which I usually practice, and it's a very efficient method if at all you want to do it in patients who are not being reduced by other methods. So what we do is that we apply traction, okay, and slightly, as soon as we give traction,
pull the arm downwards so you can see, flex the elbow, okay? So you have to flex the elbow and then you apply traction. Sorry. As soon as you apply traction, you try to externally rotate the arm. So when you externally rotate it, immediately you will actually hear a sound that the ball of the humerus will suddenly pop into its socket. So apply traction, okay? Wait for around 10 seconds, gradually increase the traction, and then externally rotate the arm, externally rotate the shoulder, and you will actually hear a voice with popping of the shoulder back into its socket. जैसे ही हम लोग सुनेंगे, it's the shoulder is reduced. Okay, once more, ये फलक्रम बहुत ज़रूरी होता है ट्रैक्शन देने के लिए. हम लोग आर्म को खींचेंगे डाउन, नीचे की तरफ, downwards, and then if it gets reduced by itself, then no need to do anything else. But if it doesn't reduce, slightly मैं हल्का सा external rotation दे देता हूँ, ऐसे external rotation दे देता हूँ with traction being maintained. Traction or external rotation, the shoulder will immediately pop into its place. So this is the other method which I usually practice, a slight modification of Stimson's method. मान लीजिए इससे भी नहीं आया, तीसरा मेथड क्या होगा? सीधा लेटना होता है. सो दिस मेथड थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द मेथड्स व्हिच इज बीइंग प्रैक्टिस्ड. व्हाट वी डू इज दैट वी अप्लाई ट्रैक्शन टू द आर्म एंड विद वन फुट वी अप्लाई अ फुट ओवर हियर, क्योंकि शोल्डर जो है आगे आ चुका है, तो इस बॉल को मैं वापस सॉकेट में अंदर बैठाना है. तो हम क्या करेंगे? What we do is we use our foot in this patient and we put our foot here. तो ये फुट कहाँ पे है? ये फुट जो है हमारे जो शोल्डर आगे आ चुका है उसको पुश कर रहा है सॉकेट के अंदर, और हम क्या कर रहे हैं? हम इसको ट्रैक्शन दे रहे हैं. सो इट्स लाइक दिस. अप्लाई द फुट हियर, put pressure with the foot over the shoulder so that the shoulder goes back into its socket and apply traction. So इस तरह से, this is also a wonderful method, and it is if other methods aren't successful, this usually works, because we are actually providing a good fulcrum here and we have entire control, पूरा control हमारे हाथ में होता है. So this is the way, but we have to push, manipulate the shoulder with our foot, और शोल्डर को अंदर पुश करेंगे, सॉकेट में बैठ जाएगा और इसको हम लोग ट्रैक्शन देंगे. दिस इज कॉल्ड एज हिपोक्रेट्स मेथड. बैठ जाओ. सो 3 मेथड्स आई हैव डिस्क्राइब्ड. वन मोर मेथड, इफ इट इज अ लैक्स शोल्डर, कभी कभी सिर्फ एक हल्का सा एक्सटर्नल रोटेशन करता है और शोल्डर अपना बैठ जाता है. So what I usually do is, the first method which I usually try is this one. Whenever the patient comes with shoulder dislocation, always I try to first slight traction and then I try to external rotate the shoulder. If it doesn't get into its place, अगर नहीं आते तभी मैं दूसरे methods try करता हूँ. So we have basically described around the Cocker's method, the क्या कहते हैं, Hippocrates method, Stimson's method, and the last method which I would like to describe is a Milch method. Milch method में हम लोग क्या करते हैं? लेटना तो. So in Milch method, what we do is that we basically while applying traction to the arm, हम लोग traction देते हुए, ठीक है, और शोल्डर को यहाँ से मैनिपुलेट करते हैं. एक हाथ से ट्रैक्शन दे रहे हैं, एक हाथ से हम लोग जो शोल्डर है जो आगे निकल चुका है उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, वापस सॉकेट में धक्का दे रहे हैं और इसको एक्सटर्नल रोटेट कर रहे हैं. एंड देन एज सून एज वी हियर द वॉइस पॉपिंग बैक इनटू इट्स प्लेस, वी बेसिकली इंटरनल रोटेट. Okay, so what we do is that we apply traction, external rotation, and try to manipulate this. And then as soon as you hear the voice back into its socket, we try to put it here. So this is the Milch method which we are trying. These are 4 to 5 methods. ये 4-5 methods होते हैं. Thank you all so much. तो ये 4-5 मेथड्स होते हैं, जिसके बाद ये शोल्डर जॉइंट जो होता है वो अपनी जगह आ जाता है, एंड देन वी यूजुअली गो फॉर द एक्सरे चेकअप.
एक्सरे में हम लोग देखते हैं कि शोल्डर अपनी जगह में वापस आ चुका है, और वो देखेंगे कैसे कि this joint which was initially here, it basically goes back into its place, and this basically shows it all. Okay, the shoulder has been well reduced.